Assalamu alaikum, this is Aisha from CEO Club Pakistan, and you are watching CEO Today TV. Today in Coffee with CEO, we have a very exclusive guest. His name is Farrukh Iqbal Khan. He is the CEO and President of First Women Bank, and he has more than 28 years of experience in banking industry and in different areas like in banking, credit sector, in insurance, mutual funds, and digital marketing. Digital banking. Okay, so over to you, sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Thanks for giving me this opportunity to talk to you. You're most welcome, sir, and thank you so much that you have given us your precious time. Thanks for being here. So I started my career in '93 and I did my MBA in '92 from Zikr University, Multan. And my first job was with the Central Bank of Pakistan, which is State Bank of Pakistan. So I think that was a very good forum to start a career. और उस टाइम पे यू बेटर नो कि MBAs की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. देयर वर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशन विच वर ऑफरिंग MBA. So I was lucky to have that and then started career with the State Bank of Pakistan. Spent almost 10 years with State Bank of Pakistan, and that basically strengthened my base, give me a lot of exposure in the banking side because I was mainly involved on the banking inspection and regulation side. And then onward I then decided to move to that commercial banking side. And from onward I have been associated with a couple of banks. And my last institution before coming over here was the Askari Bank. There I spent almost 10 years and worked on various positions as a head of credit, as a head of audit and head of operations. And from there I then got an opportunity and got selected for this bank, and recently I have joined this bank as a CEO. And let's see. And congratulations, sir, for this position. And more than 28 years of experience in banking industry, and you have served a lot of years, a lot of time, and even you are serving. So what are your pain points, your pride points? I think it's a very difficult question to answer, but obviously getting up to this level is not that easy. You have to go through a lot of you can say obstacles and what should I say, you have to equip yourself to be in this position, in this role, and that needs something, not as a routine. You have to go one step ahead of that. So I think with the blessing of Allah and especially my कहते हैं ना, मेरी पेरेंट्स की इतनी दुआएं हैं और सबकी विच मेक मी एनेबल टू कम टू दिस लेवल. मेरी अपनी चले मेहनत तो है सो है, बट अल्लाह ताला स्पेशली आई थिंक ब्लेस्ड मी टू बी ऑन दिस पोजीशन. तो आई थिंक जो एक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं टू कम टू दिस लेवल, आई कंप्लीटेड दैट, और this is the final outcome. Now let's see how it goes on in the future, but I am confident that I will be able to carry it further. Inshallah. So sir, it's the first women bank. So नाम से पता चल रहा है women. So women empowerment में आपका क्या take है, क्या किया और क्या आगे क्या आपके वो हैं roles? Definitely देखें, ये bank is basically formed to empower the women. And it's almost now 32 years that this bank was incorporated and came into business. And since that, it's a long journey, and this bank is doing its all best for the women empowerment. And going forward, हमारा जो focus है वो भी इसी चीज़ पर है. But by saying that, it's not that this bank is only working for the women empowerment. It's working for all the segments, for all the sectors. उसमें हाँ हमारा primary focus is on the women empowerment. और उसके लिए अभी रिसेंटली जितनी भी ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं रिलेटेड टू द लाइक मेरा घर मेरा पाकिस्तान है, कामयाब नौजवान है, इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, उसके लिए हमारा एक फुल कंप्लीट फोकस है ताकि हम उनको जितने भी हमें टारगेट्स मिल रहे हैं हम उन टारगेट्स को ना सिर्फ अचीव करें बट सरपास करें. और अल्हम्दुलिल्लाह सो फॉर नाउ वी हैव डन आई थिंक माशाल्लाह लॉट ऑफ good in that initiatives.
तो definitely we would like to create more opportunities for especially for women segment, क्योंकि I believe कि इस segment में बहुत ज़्यादा potential है and that we need to tap, और उसको जितना भी हम आगे लेके जा सकें, that will help in the overall, you can say, growth of the economy. So sir, मेरा पाकिस्तान मेरा घर. So what is the take on your in this? I think I totally believe that इस मुल्क में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरा घर होना चाहिए. एंड दिस इनिशिएटिव हैज़, कहते हैं ना, गवर्नमेंट ने एक कॉमन पर्सन की ख्वाहिश को ना जाके टच किया, उसको अटेंड किया. एंड सो फार नाउ आई थिंक दिस इज़ गोइंग वेरी सक्सेसफुल. और इसमें जो भी इसको जिस तरह कहते हैं वो टेलर किया गया है और इसमें जो फीचर्स रखे गए हैं, दे आर वेरी वेरी गुड. और इस पर हमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि जितने भी लोग हैं जिनकी ये अभी तक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई उसको पूरा कर सकें. गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे इस पर बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है. और इंशाल्लाह वी विल डू ऑल द बेस्ट टू मेक दिस स्कीम मोर सक्सेसफुल. सर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किस तरीके से करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की? क्या देखिए, एम्प्लॉयज़ के लिए तो डेफिनेटली हमारे रेगुलर उनकी जो ट्रेनिंग है, चाहे इन हाउस है चाहे आउटसोर्स है, वो दोनों जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिपेंड करता है कि उस स्टाफ की क्या चीज़ है, उसकी क्या ट्रेनिंग नीड असेसमेंट्स हैं, उसके हिसाब से उसका हमारा चलता रहता है. डिफरेंट कोर्सेज चलते रहते हैं. कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, कुछ वैसे स्किल सेट्स चाहिए होते हैं, सॉफ्ट भी हैं, दूसरे भी हैं. तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर, आई थिंक, नेसेसरी टू इक्विप आवर स्टाफ so that they can do a better service for the customers. So, sir, in COVID-19, what are the problems this specific bank has faced, this industry? लेकिन वो बैंक स्पेसिफिक तो नहीं, इट्स ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री वाइड एक चैलेंज है. आई थिंक दिस कोविड इज़ अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर दिस बैंक. एंड सो फॉर नाउ वी हैव बीन सक्सेसफुल इन मीटिंग दैट चैलेंज, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक स्टाफ की हैंड होल्डिंग भी करनी है, अपने बिज़नेस को भी उसी तरह मेंटेन रखना है. और उन सारी चीज़ों को करने के लिए अब आपका आई कांट फोर्स एनी स्टाफ के जी अगर खुदा न खास्ता वो कोविड में पॉजिटिव हो गया है तो वो उसको मैं कहूँ कि जी वो ऑफिस भी आए. तो अब एक स्टाफ ऑफिस नहीं आता तो आई हैव टू हैव सम बैकअप अरेंजमेंट एज वेल. तो हमने वो सारे जो बिज़नेस कंटिन्यूटी से रिलेटेड जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं, कीपिंग इन व्यू दिस चैलेंज, वो हमने इन प्लेस किए हैं. सो फॉर नाउ अल्लाह का शुक्र है कि हमें कस्टमर सर्विस में या हमारे जो बिज़नेस कंटिन्यूटी है उसमें कोई इशू नहीं आया है. और हमने स्टाफ को भी एट द सेम टाइम उसी तरह टेक केयर किया है जो लोग इसमें प्रॉब्लम में आए हैं. तो विद रिस्पेक्ट टू देयर मेडिकल अरेंजमेंट्स और वट एवर द लीव्स, ये वो सारा तो हमने अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है. क्योंकि देखें, आई बिलीव कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग चीज़ है इन एनी वर्क, दैट इज़ द team management, this personnel management. That's a very challenging job. तो बट और उसी को मेरा ख्याल में द सक्सेस इसी में है कि हाउ यू मैनेज ऑल दीज टू फैक्टर्स, बेसिकली द स्ट्रेस एंड एंगर. But if you can manage it and if you can keep it in your control, then it becomes very easy to deal the things on a day-to-day basis, and especially with your team, with your staff. So I think that is I manage all these two things very well, or I try to keep these things in my control. एक certain level से ऊपर ना जाए which can impact negatively on my output. And I believe that this is the main reason that I have been successful to be on this position. In my previous career, I have managed these two things very well. So let's see. So, sir, 3 competencies of a leader. 3 competencies that it must have in it. Like a leader has to drive the show, has to drive his team from the front. ठीक है. तो उसके लिए इट्स नेसेसरी दैट ही शुड ऑल्सो बी अ रोल मॉडल फॉर अदर्स. ही शुड बी देयर फॉर हिज टीम व्हेन एवर दे नीड हिम, और ख़ास तौर पे व्हेन इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, एंड शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर इज गोइंग ऑन, not to just pass on that buck to others. So I think these 3 areas needs to be there to be a good leader. So what do you think, it's inbuilt quality or after with the passage of time it will? देखिए, कुछ तो चीज़ें होती हैं. आई थिंक दिस
few features are very God gifted, but one has to again realize and understand first himself कि क्या है क्या नहीं है. But कुछ चीज़ें आपकी obviously with the passage of time you have to learn with your experience, especially जब आप लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो you have to pick up the points कि क्या चीज़ें अच्छी हैं जो उनकी success की हैं. So if you can pick that points and you can adopt that, because picking and then उसको practice करना is more difficult. But if you can practice that and adopt that, then they get translated into success. Who is your role model, sir? My role model, I think that's a difficult question. I will not say that I don't have any role models, but मेरे जितने भी especially bosses रहे हैं, और even इसमें मेरा एक strategy जो मेरी अपनी approach है, it's not कि जो मेरा senior है मैंने उसी को role model बनाना है. अच्छा. I just go कि कोई भी person है मेरी टीम में मेरे साथ, चाहे वो मुझसे junior है, senior है, मेरे level पर है, उसकी कोई भी चीज़ अच्छी है, I try to pick and adopt. So I can't say that's one single person is my role model. That's so inspiring. Yeah. So, sir, 3 words for success. 3 words for success. I think on the top is the integrity, Yeah. and then comes the humility, and third one is I think the giving. Giving. Okay, sir, idea of happiness क्या है? Again, I think you have picked all the difficult questions. So, idea of happiness, I think happiness has no boundaries. It's not easy. कोई बंदा देखे ना, कोई बच्चा एक छोटी सी टॉफी पे भी खुश हो जाता है, और कोई बड़ा इंसान ना मे बी प्रेसिडेंट बनने में भी खुश ना हो. इट डिपेंड्स कि व्हाट इज योर लेवल. तो इसलिए मेरा ख्याल में बंदे को छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना चाहिए, और इंस्टेड के किसी चीज़ पे उदास हो, यू शुड छोटी सी चीज़ को भी आप इंजॉय करें, उस पर फील गुड अबाउट इट. इट ऑल कम्स फ्रॉम योर इनर फीलिंग्स. Your self-satisfaction, we can say. Yeah, self-satisfaction, but it depends at how you see the things. Yeah, your vision. तो एक ही चीज़ होगी, एक ही जो एक बंदे को खुशी देगी, एक बंदे को नहीं देगी. Yeah. It depends all कि आप उन चीज़ों को कैसे लेते हैं, कैसे absorb करते हैं, आपका अपना तरीकाकार क्या है. So again, I will say there is not a standard formula or yardstick that you can say that this thing will give me happiness or this thing will not give me happiness. It all comes from your inside. Yeah. So, sir, at last, I'll ask you what are your achievements in your life? The most important achievement that you think that it's very much important for me. देखिए, as a banker, if I say that I think banker या किसी भी कोई फील्ड में होता है, तो इसकी पहली ख्वाहिश ये होती to be on the top. So in that terms, professional terms, I will say that getting on this position was obviously my also a dream which came true, and I will say that that's my success. It's your biggest achievement. That's the biggest achievement in terms of, you can say, my professional career. And on a personal account, I think there are a lot of things that I have a good family, my kids are doing well. वो एक पर्सनल ऑब्वियसली जो भी बंदे की होती है ख्वाहिशात की, उसकी जो ख़ास तौर पे जो उसके बच्चे हैं वो अपने लाइफ में अच्छे लेवल पे जा रहे हो, तो दैट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट यू कैन से व्हिच एनीवन कैन हैव. और अल्हम्दुलिल्लाह माय किड्स, माय फैमिली, दे आर डूइंग वेल, तो दैट गिव्स मी अ गुड सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट एटलीस्ट आई हैव कंट्रीब्यूटेड. और जो मेरा क्या कहते हैं, एंड ऑफ द डे सक्सेस यही है. और एक और चीज़ विच गेव मी अ लॉट ऑफ यू कैन से सेटिस्फैक्शन, जो मैंने अभी आपसे कहा कि द गिविंग, तो आई थिंक द गिविंग इज़ अ पावर. इफ़ यू हैव द पावर ऑफ गिविंग, everything will give you happiness, everything will give you sense of achievement, and whatever you want to say that. But that sense of power of giving is so much strong कि आप अगर आप उसको फील करना शुरू कर दें तो दैट विल गिव यू एवरीथिंग. और उसमें जब पावर ऑफ गिविंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें गिविंग से ये मुराद नहीं कि कोई आप बहुत बड़ी चैरिटी शुरू करते हैं या बहुत कुछ करना शुरू करते हैं. इट कैन बी इन अ मॉनिटरी टर्म और अदरवाइज एज वेल. आप किसी को थोड़ी सी अगर स्माइल के साथ मैं हमें सलाम का जवाब भी दे देंगे तो वो उस पर भी बहुत खुश होगा. दैट्स आल्सो आई थिंक इट्स स्मॉल थिंग्स
which comes into that, giving definition, my definition. Yeah. So your toughest decision in your life, either professional, personal, you think? That's toughest decision. Maybe it's not easy to recall कि toughest decision तो बहुत होते रहते हैं. जी. But it depends कि how you define that toughest. But I will not say toughest, but मेरी एक जो approach ये रही है in terms of that decision making कि I don't take much time in taking decisions, especially in that professional life, because I'm not saying कि मैं बिल्कुल ही I take decisions in very hurry, but I don't hold the decisions. Because in professional life, if you hold the decision, I think at the end of the day it damages. But if you take the decisions timely, Yeah. and seriously, and you can say honestly, ठीक है, I will not say that your every decision is always proved to be correct. But अगर उसमें कोई जाके कहीं कोई चीज़ प्लस माइनस होती है, you can correct it. But if you keep on holding it, अच्छा यार मैं करूँगा, तो then that delay damages the outcome. बिल्कुल ऐसी. So that's why I always try to not to hold the things, but to move forward. Sir, why emotional intelligence is important as a leader, as a CEO? देखिए, emotion, जैसे मैंने कहा कि you are dealing with the personnel, you are dealing with the human. So that emotional intelligence is very important in that sense. तो अगर आप उसको नहीं हैंडल कर पाएंगे तो then you will not be able to run the show. सर कुछ आपकी बुक्स हो फेवरेट वो बता दीजिए. इस मामले में मैं ज़रा थोड़ा सा इतना ख़ास नहीं है, अव्वल तो टाइम भी नहीं होता और नाम बुक्स में इतनी कोई आई कांट गिव यू सम गुड नेम्स के कौन सी बुक्स हैं, बट ये जो अभी आपने दिया है आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रीड इट इंशाल्लाह. सर एट लास्ट आप ये बताइएगा कोई ऑप्टिमिज्म का मैसेज दें यूथ को, हमारी जनरेशन को. देखिए, मेरा ख्याल में there is a lot of potential especially in Pakistan going forward, or our youth has to play a very very important role for the overall growth of this country. क्योंकि इस टाइम अगर आप देखेंगे तो यूथ का जो परसेंटेज है, जो रेशो है, वो बहुत ज़्यादा है. एंड ठीक है, मेरे कोविड में थोड़े से चैलेंजेस आए हैं और लोग थोड़े से परेशान भी हुए हैं, बट जितने चैलेंजेस होते हैं उन्हीं में अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं. सो द यूथ शुड फोकस ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग अप बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन स्पेशली, एंड दे शुड नॉट लूज एनी होप फॉर द बेटरमेंट. एंड फॉर दैट आई थिंक द ओनली की फैक्टर विच दे शुड फोकस इज़ द कमिटमेंट. अगर कमिटमेंट के साथ अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी वेरी सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल कैरियर. थैंक यू.